Assalamualaikum. I'm Dr. Mohammed Afzal, second year resident in Ops and Gynae in Hamid Latif Hospital. Today, my topic of presentation is heavy menstrual bleed. Let's start with the history of patient. Mrs. FN, 50 years old, wife of Mr. Anand, resident of Lahore, married since 1992, is a housewife. She is para 4 plus 2, all SVDs. Her last menstrual cycle is 12th of April. Menstrual period is स्लाइड चेंज नहीं हुई आपकी? I am still on the same slide. Can you see the slide? शेयर कर रही है, स्लाइड नजर आ रही है, चेंज नहीं हो रही. एक मिनट. जी अब ठीक है. वो आज का वो सेशन हो जाएगा, मैं आपको जरा बात करूंगा कि जो फॉर्मेट है इसको हमने किस तरह से क्या करना है. स्लाइड चेंज हो रही है आपके पास? ये वो फुल नहीं आ रहा इसमें स्लाइड में. चले नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे रहने दो, ऐसे कर सकते हो. चले. So, let's start with the history again. Mrs. FN, 50 years old, wife of Mr. N.I., resident of Lahore, is married since 1992 and is a housewife. She is para 4 plus 2, all SVDs. Her last menstrual period was 12th of April 2024. Presenting complaint. Patient presented with a complaint of heavy menstrual bleeding with lower abdominal pain from last 1 year. History of presenting complaint. Patient was in her usual state of health, previously having normal regular cycle with normal flow when she started having heavy menstrual bleed 1 year back. Her current cycle is regular, 9 to 10 days every month with heavy flow, soaking 6 to 7 pads per day, passing mild to moderate size clots on day 1 and 2 of menstrual cycle, associated with lower abdominal pain that was only relieved with medication. Patient gave history of urinary hesitancy from last 2 to 3 months. She gave no history of for last 2 to 3 months. Patient has no history of intermenstrual bleed, any bowel Did not complaint. give history of it.
Patient did not give history of intermenstrual bleeding, no bowel complaints, no history of weight loss, loss of appetite, heat or cold intolerance, blood transfusion, or any other associated factors. Moving on to her gynecological history, her age of menarche is 15 years, was 15 years. As already discussed, her menstrual cycle is regular, 9 to 10 days. 9 to 10 days नहीं आपने उस वक्त previous cycle बता रहे हैं पहले previously वो था अब ये था आपने लिखा हुआ previous वाला को पढ़ दो Previously, her menstrual cycle was regular, 7 days every month, average flow with no dysmenorrhea. Her current cycle is regular of 9 to 10 days every month with heavy flow. every Associated month नहीं कहो 30 days आपने लिखा हुआ है with so say 30 days every month is not a precise description what you have written you should speak that okay. उस terminology में ही बोलोगे आप Every 30 days. She has no history of use of आप contraception. menstrual cycle को जब आप describe करते हो तो 7 by 30 days 7 to 9 by 30 days so you don't have to वो मतलब है कि ये इतना इस तरह से है when you say that that's the standard terminology that you use Regular 9 to 10 days every 30 days with heavy flow associated with dysmenorrhea. She has no history of थोड़ा contraception जब use. एक कंपोनेंट खत्म हो तो पॉज दो ताकि आगे उसी के साथ उसी सांस में वही फिक्र आगे नहीं चलाना हाँ She has no history of use of contraceptions. No history of cervical smear. she never electricity. had cervical smear taken इस तरह से उसको Taken. Moving on to her OBS history. It's a quick review of her OBS history. She had all SVDs with 3 male alive issues and 1 female alive issue and 2 first trimester miscarriages followed by DNC at a private ये hospital. जरा मैं in थोड़ा सा Faisalabad. बता why do we say DNC what does N stand for Dilatation and N is not an abbreviation of and is it an abbreviation of and no, sir. therefore DNC someone misunderstood when one called D and C, DNC, and someone mistook it for DNC, DNC. Instead of hearing that N, D, they took it for DNC. And that's why, because whosoever writes DNC, I would take it that they don't understand that it is D and C, And C. right? Yes, sir. There is a different way of writing and in an abbreviation form, and you can use that and but you haven't written it like that. So therefore, stick to D and And C, that shorter version of N, And right? So D and C. It is D and C. and C. D and C. From a private hospital in Faisalabad. आप वापस ये आगे भी 2-3 खाने लगे हुए हैं So जब ये, आप menstrual yeah, जब आप no. obstetrical history बताते हो तो फिर आप ये वाली चीज करते हो ये उसको because if you incorporate in your expression then you would remember that. Now in this particular patient it may not be relevant. Someone can argue about that the weight of the babies or their status or whether they were breastfed or not, were alive, live born, stillborn, etc. That's not related to her presenting complaints. And therefore one can skip that, right? But if you start doing that when they would be relevant, even that at that time you may not talk about that. So therefore, when you are giving a summary that she is para 4+2, that she had 4 full-term pregnancies, because all of them they are full-term pregnancies. So you say that 4 full-term pregnancies and all ended in a normal vaginal delivery or spontaneous vaginal deliveries. There were no complications during pregnancy, labor, or puerperium. And she delivered 3 male and 1 female children alive. All. And she recalls that they were of average weight. Now, you should need to add also the place of delivery actually in this. They were all hospital deliveries, domiciliary or home deliveries, or where they were They carried were out. delivered at a private hospital in Faisalabad. You can say that they were delivered at a private hospital.
and all of them were of average weight, or there wasn't any significant, and they're all alive and healthy. जी सर. Because that is something which would complete it. If you've taken the trouble of putting it in this chart, then the chart has to give that information, and you also, at least you can speak rather quickly, you can go through this, that she is para 4+2. All pregnancies were full term without any complication, and pregnancy, labor or porphyrium, all normal, resulted in normal delivery, ended in normal delivery, resulting in the birth of 3 male and 1 female child. All were of average weight, and they're all alive and well. Okay, sir. Shall we proceed to the next one? Moving on to her medical history, medical and surgical history. She is a non-hypertensive, taking tablet. No. Non-hypertensive, taking tablet Trifuge 5 by 160 for Triforce kya hai? What is triforce? as an antihypertensive. What kind of antihypertensive is it? Beta blocker, I think so. No, it is not beta blocker. तो जब आप ये देखो कि आपने कोई दवाई का नाम ले रहे हो, तो then you should know what kind of medication it is. Let's say that she was on an antidepressant, and you are presenting history of a pregnant woman, and she is on antidepressant, and there are antidepressants which may be taken, and there are those which should be avoided. So if you know the this name, the trade name, then it will be worthwhile to know that what does it consist of. Yes. Should have known It this. is an ARB or the other kind of drug. So far as I recall, it is an ARB. Yeah. What is ARB? Angiotensin receptor inhibitor. आगे देखो आज फिर ठीक है Yes, sir. चलो No history of any cardiovascular disease. She was आपसे थायराइड diagnosed. के बारे में Yes, sir. I'm Acha. moving on to. She was diagnosed with hypothyroidism 3 years back, and since been taking Tylenol 100 mg once daily. 100 before mg है ये Some आप mcg. what does that mean? So that is microgram. Micrograms. आप इस तरह से भी लिख सकते हो और माइक्रो का वो यू भी लिख सकते हो, यू लिख के तो जी लिख माइक्रोग्राम. She So has- when you write something, when you know the dosage, then you should, वो ये आप बता रहे हो तो उस डोजेज की टर्मिनोलॉजी और वो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से कर. जी sir. She has no past surgical history. Family history, both her parents are diabetic and hypertensive. No history of breast, uterine, ovarian, or any other malignancy in family. Personal history, no known allergies or habituations. यहाँ पे आप जब कन्वर्सेशनल स्टाइल में आप बोलते हो ना, थोड़ा सा मैं वहां पे आपको कह रहा था कि जो लिखा हुआ है वो बोलो, और अब मैं थोड़ा सा उस तरह से कर रहा हूँ, so there is a bit of confusion in that. But यहाँ पे आप जब मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री से आगे चले हो, तो आप फिर बोल सकते हो कि her family history for diabetes and hypertension is positive, and there is no family history of any kind of cancer in the family, right? जी sir. And similarly, and she personally, she doesn't has any known allergies, and there is no history of any habituation. So वो उसको उस तरीके से कर दो. आजकल ज्यादा emphasis इस चीज पे है. आजकल तो खैर ये history presentation वैसे ही खत्म हो गई है, that you don't speak the headings. Okay, sir. But if you do, there isn't anything bad about it. As a matter of fact, I personally would still would want someone to narrate the history as you are doing, because then you know what history is being presented, that you asked about that, and that also emphasizes the importance of that particular component of the history, Yes, sir. personal history, right? Moving on to the examination. 50-year-old lady of height 5 feet 3 inch. How do you know about 50 years old on examination? So while examining, and right now you said that You- presented. in- No, you at this stage, you don't say that she is a 50-year-old. वो आपने पहले बता दिया. Because अगर यहाँ पे आप 50 years old लगाओगे, तो ऐसा लगता है जैसे आप देखने से आपको पता चल जाता है कि ये बंदा 50 साल का है, या ये 40 साल का है, या 80 साल का है, right? So वो वाली बात जो है, आप
जनरली आप कहो कि an old lady. Oh. 50 साल ओल्ड नहीं होता पगली, 50 साल ओल्ड लेडी, 50 साल, इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। 50 साल आजकल मिडिल एज कहा जाता है, सो यू डोंट जनरली यू डोंट कमेंट अबाउट दैट। Okay, sir. ठीक है। हाँ। So a lady 5 feet 3 inches weight 77 kg, giving a BMI of 29.7. हाँ, यहाँ पे आप per वो meter square. उसको वो नेचुरल सा बनाने के लिए when I took the history, the patient was sitting comfortably on bed or on chair। वो वो sir, I was about नहीं, to वो say. मतलब अब वहां से शुरू करो। Mhm. She was comfortably sitting on chair or she was lying, and on examination we found that her height was on examination। अब वहाँ 50-year-old sitting comfortably 5 feet, फिर आप examination करते हो फिर उसको उस तरह से on examining her height was 5 feet 3 inches, फिर इस तरह से। Okay. A lady sitting comfortably in her bed, well oriented in time, place, and person. Her height was 5 feet 3 inch, weight 77 kgs, giving a BMI of 29.7 kgs. That falls into a free obese category. Blood pressure was 160 by 100 millimeters of mercury। millimeters of mercury. Pulse was 83 per minute. पल्स Rest पहले of- बताते हैं, ब्लड प्रेशर ये तुम सबको ऐसा है, तुम ब्लड प्रेशर पहले बताते हो, पहले आप पल्स लेते हो। क्यों पल्स लेते हो पहले? ताकि आपको पता चले कि है कहाँ, राइट। Yes. और प्रॉपर तरीका जो ब्लड प्रेशर लेने का है उसमें भी आप पहले आप ब्लड प्रेशर कफ लगा के पहले पैल्पेटरी मेथड से ब्लड प्रेशर को, सीधा स्टेथोस्कोप मत, Yes. राइट। Yes. A proper cardiologist would take blood pressure like that। पहले वो पैल्पेटरी मेथड से देखेगा, फिर स्टेथोस्कोप रखेगा। एंड फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज, जब मरीज को आप हाथ लगाते हो तो आप उसकी पल्स देखते हो सबसे पहले। तो आप पल्स को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते हो, फर्स्ट पल्स एंड देन ब्लड प्रेशर। Okay. Her pulse was याद रखो तुम सब। was 83 per minute. Blood pressure 160 by 100 mm of नहीं है, millimeters of mercury। millimeters of mercury. Respiratory rate 23 per minute. There was no visible pallor, jaundice, or cyanosis. Thyroid was not enlarged. No accessible lymph nodes were palpable. Bilateral breast symmetrical with everted nipples. No mass palpable in all 4 quadrants of breast. On her abdominal examination, inspection, central inverted umbilicus, no visible scar mark, pulsation or discoloration or bruising of skin noted. On palpation, a single mass of 14 into 16 week size arising from the pelvis in the midline. दोबारा से बोलो पैल्पेशन। Mass of 14 to 16 पहले week size. आपने सिंगल मैस कहा था, Uh, किससे सिंगल मैस? irregular से surface पे तो I could तो मतलब सिंगल का लफ्ज क्यों बोला था आपने? You just say that there is a mass। there is mass of 14 to 15 week size arising from आपने the pelvis 14 in to the 16 लिखा हुआ, बोल्ड 14 to 15 रहे हो। 14 to 16 sir. हाँ। Why is it not appropriate to say 14 to 15? 2 inches का ये वो इंचेस का नहीं होता, ये सेंटीमीटर्स में होता है, इंचेस का नहीं होता। एक्चुअली जो आप फंडल हाइट बताते हो, ये जो आप बता रहे हो 14-16 वीक्स gestation का साइज बता रहे हो, you don't have to say, लेकिन mass of 14 corresponding to 14 to 16 weeks of gestation size, that would give। और हम एब्रीविएशन में चूंकि ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी किया है तो इसलिए हम सीधा सीधा 14-16 week size बोल देते हैं, but that is a terminology which we borrow from obstetrics, although we are discussing a gynecological case। Yes. Arising from the pelvis in midline, having a आपने irregular arising from the pelvis कैसे कर लिया? मैं पूछूंगा कि how do you identify that the mass is arising from pelvis? क्योंकि हमें उसकी लोअर लिमिट नहीं पता चल रही थी ना, तो that's why अच्छा, तो irregular surface yet mobile. On bimanual examination, uterus 16 week size, having irregular surface, firm in consistency, mobile, no palpable. सरफेस नहीं आप बोल सकते यहाँ पे, वहां पे सरफेस बोल सकते हो। बाय मैनुअल पे सरफेस कॉन्टूर लिखा हुआ है आपने, कॉन्टूर इज अ बेटर टर्मिनोलॉजी।
Firm in consistency and mobile. Bilateral furnaces were clear. Speculum examination नहीं क्या आपने? No, sir. Speculum examination नहीं किया। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए था, sir. क्यों? Because of her age, अगर age, And let's say the complain age of- of the patient was 30 years. still we need to do that. So age has got nothing to do with speculum examination. Someone who's complaining of abnormal bleeding per vagina, she should have a speculum examination. Why should she have a speculum examination? When she obviously has fibroids on the CA cervix देखने के लिए, CA cervix को rule out करने के लिए cervical एकदम से शूट करोगे सीए सर्विस पे पहुंच जाओगे और दरमियान में कोई चीज नहीं आती। discharge. आप you do speculum examination to see the status of the cervix. You say status of the cervix, vaginal walls, and Discharge. discharge. But essentially, from the standpoint of this particular patient, someone who is complaining of abnormal uterine bleeding or presents with abnormal uterine bleeding, you want to rule out cervical causes of bleeding. Yes, sir. And then, if you would say that, then I would ask you, what are the cervical causes of abnormal bleeding? So, ये question है, ये भी जाके ढूंढोगे आज, देखोगे मैंने नहीं बताना, हम देखोगे abnormal cause. And how does the normal cervix look? And what are the abnormal appearances of abnormalities of appearances of the cervix? Yes, sir. Hmm? Okay, sir. ये वाले भी जाके देखो और उनकी description भी देखो. Yes, sir. Now, on the basis of history that you have taken and the examination that you have carried out, Of the differential diagnosis history you're trying to your advise. differential diagnosis is The second one is adenomyosis on the basis of history, as the patient is having dysmenorrhea, having menstrual bleed, along with large size uterus. I have concluded ovulatory dysfunction in my differential diagnosis because of the age of the patient, as ovulatory dysfunction prior to menopause lead to increased endometrial thickness due to unopposed estrogen effect, hence leading to endometrial hyperplasia. That may also be a cause of having menstrual bleed. As the patient is known case of thyroid dysfunction, so hypothyroidism, this is included in a differential diagnosis. good. अच्छा, यहाँ पे आप ये आपने ठीक आप देखा ना चार कर दिया, तो ये मुमना ने पहले जरा लिस्ट बनाई हुई थी, जरा लंबी बनाई हुई थी. लिस्ट लंबी नहीं होनी चाहिए, 3-4 होने चाहिए. एंड यू हैव गिवन गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. यहाँ पे आप शुरू इस तरह से भी कर सकते हो कि although it appears to be a straightforward case of fibroid uterus, but still these other differential diagnoses would come under consideration. आपने जिस तरह से ओवुलेटरी डिसफंक्शन की बात की वो भी ठीक है, और एडिनोमायोसिस भी इस तरह से हो सकता है, वो भी इरेगुलर एनलार्जमेंट कर सकता है. ठीक है, चलो गुड. Moving on to the investigation of patient that was carried out. on Now, 14th it of is April. important, go back to the previous slide. It is important that after you have taken the history and you have carried out the physical examination, then you arrive at a list of a small list, 3 to 4 maximum, small list of differential diagnoses, Yes, sir. right? Yes, sir. And because your investigations will be directed towards either differential confirming or ruling out each of them. Yes, sir. Okay, so then you would carry out, there would be investigations which generally are considered to be, some of them are considered to be baseline health investigations, And some which are you do in any case. Yes. And then there would be specific for the complaint with the patient, and third category would also be if the patient is suffering from some For management. or some problem, like she is a hypertensive, she has a thyroid problem. So then you will also look at that category of, so 3 categories: baseline health category, those which are related to her presenting symptoms, and those which are also, they may also be involved, the other problems that she has. So, Okay, as sir has already told, moving on to the investigation that was carried out on 14th of April 2024.
investigation performed having a normal HbO of 11.7, HB hemoglobin. meaning hemoglobin of 11.7, white blood cell 13, platelets in normal limits, that is already given. Her urine routine examination has controversial values showing that the specimen might have been taken during her menstrual cycle. She has protein 2 positive, blood 4 positive. आपने बताया तो है menstrual cycle कब था उसको patient? Yes, sir. But this specimen, yes, sir. कब था 14 menstrual cycle? LNP क्या था? 14th of April था. 12 था. 12th of April, तो वो 12 बताया. yes, sir, 12th of April. तो 12 था तो 14 को. So तो मैंने हिस्ट्री पूछी थी क्योंकि ये मुझे स्पेसिमेन थोड़ा पता है, सा लेकिन अब में था. अब तुम बता सकते हो ना 12 तुमने 12 अप्रैल LNP बताया. अब इसको करने का क्या तरीका है? How to minimize the contamination of urine so that false protein and blood would be there. सर वो आपने पिछली दफा भी तरीका बताया था और हम पढ़ के भी आए हैं लिबियास को अपार्ट करके मिड स्ट्रीम आप midstream बोलोगे वहां पे वो तरीका नहीं बताना आप बोलोगे मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन ऑफ urine especially which is connected properly. Yes. Her TSH level is in normal limits. All other values are also in normal limits. TSH value is important, which is not taken in routine, but taken in this patient because of the history of hypothyroidism. Her ultrasound carried What on. about RFTs, LFTs? They were all in normal limits. Sir. जब TSH की कर रहे हो तो उनकी explanation भी दो ना. हाइपरटेंशन की वजह से सर आरएफटीज वगैरह इंपॉर्टेंट थे. वगैरह कोई ना फिर आरएफटीज एंड एलएफटीज इंपॉर्टेंट थे. LFTs का क्या ताल्लुक है hypertension के साथ? Not with hypertension, but these are carried out in routine. Do you carry them out in routine in a 50-year-old woman who is presented with heavy menstrual bleeding? Not What is really. the would you do LFTs? No, sir, not really. फिर आपने क्यों किया होगा? नहीं सर्जरी में LFTs करवाते हो? कोई नहीं क्या किए होते. सिजेरियन का LFTs करवाते हो? कल के जो ऑपरेटिव केसेस हैं उनमें से कितने के LFTs हुए थे? So कहने का मकसद ये है, the point important here is that if you mention a test, then you should be prepared to defend its importance, its relevance to the diagnosis or management of the patient. तो वो जो है वो उस लिहाज से आपके लिए important है कि आप ये करके बताओगे और strike it out. Okay, sir. ठीक है? Her ultrasound was carried out on 15th of March, showing a retroverted bulky uterus measuring 10 into 7 into 8 centimeter. At least 2 fibroids seen in the fundal region along the interior uterine wall, a larger one in subserosal location of 5 into 4 centimeter, and a smaller one of 2 into 2 centimeter located in the intramural region. Her endometrial thickness was 16 mm, homogeneous. Millimeters, homogeneous. Her ovaries was of normal size. क्या नहीं जा रहा? आवाज नहीं जा रही है. अच्छा तो 2 मिनट.
पहले से हुआ ना, उसके वैसे ही किसी ने जो जिस तरह से अल्ट्रासाउंड भी उसका बाहर से ही हुआ था, पहले ब्राउन के लिए। राम साहब, इसके साथ जो बुक का साइन है ना, इस पे क्लिक करना है। इसमें बुक का साइन बना हुआ है ना प्रेजेंटेशन मोड के साथ, ये 4 बॉक्सेस है ना नीचे बॉटम में, जहां पे नोट्स कमेंट्स एक मिनट, 4 बॉक्सेस है, उसके साथ बुक साइन बना हुआ है, उस पे क्लिक करना है। हाँ जी, स्लाइड चेंज करें। अब शेयर हो रही है, आप लोग नजर आ रही स्क्रीन? शेयर हो रही है, स्लाइड चेंज कीजिएगा। यही शो हो रही है आप? हाँ जी। शो हो रही है लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं गया। आप चेंज हुई है। इसके साथ हो गई। हाँ जी। So on the basis of history, examination and investigation, the final diagnosis given is uterine fibroids. फिब्रोइड 5 Fibroids. फिब्रोइड कहाँ से सुना तुमने? Fibroids. जो अगर एग्जामिनेशन में जो फिब्रोइड बोलता है उसके बारे में मेरा इंप्रेशन ये होता है कि उसने कोई क्लास अटेंड नहीं की, क्योंकि जब भी कोई पढ़ा रहा होता है तो आई वुड इमेजिन दैट ऑल टीचर्स वुड कॉल दिस अ फाइब्रॉइड, दैट इज द प्रोनाउंसिएशन। तो समवन हु हैजंट हर्ड दिस वर्ड, तो वो उसको फिब्रॉइड बोलेंगे अपनी तरफ से पढ़ते हुए। जैसे म्यो हॉस्पिटल इज म्यो हॉस्पिटल, जिन्होंने सिर्फ उर्दू में देखा हुआ वो म्यू हॉस्पिटल बोलते हैं, तो म्यू हॉस्पिटल। या हम जब बात करते हैं कि जी फोन पे बात की, तो अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोग भी आप करते हैं फोन, फोन पे किया, वो फोन उर्दू में लिखा हुआ जो उसको फोन लगता है। इट इज फोन, इट इज म्यो, इट इज फाइब्रोइड। Fibroids. Case summary, a 50-year-old para 4 plus 2, ओल्ड का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, तुम क्यों ओल्ड उसको कर रही हो? a 50-year lady, para 4 plus 2, all STDs, hypothyroid presented with heavy menstrual bleeding with lower abdominal pain for last 1 year, irregularly enlarged uterus on examination, and fibroids on ultrasound. So the plan proposed to the patient was total abdominal hysterectomy plus bilateral salpingectomy. Operative findings. Uterus irregularly enlarged with obvious fibroids, a fibroid of 2 into 2 centimeter in mesosapiens of ischemic portion of right tube, a parafemoral cyst in relation to left tube, both ovaries were normal looking. Procedure performed was total abdominal hysterectomy with bilateral salpingectomy. Both ovaries were conserved as was already discussed preoperatively with the patient. The picture specimen, her endometrial cavity was normal looking. अब इसमें because we have that tape over there, I would disagree with the findings of ultrasound, because ultrasound showed a uterus of 10 into 8 into 6 centimeters, which actually is more or less the size of a parous uterus, not a uterus which would appear to be 14, 16 weeks, right? Yes. So that's a discrepancy, because here you can see that the uterus from one end to the other is 16, and 16, what yes. appeared to be a large fibroid, as a matter of fact, on Was the your side, cavity? that actually was the cavity. The Cavity on the fibroids were in line with the cervix, right? And one of the, now there ought to be quite a few questions about it, Yes, sir. right? Why was hysterectomy done? हम उसकी तरफ आते हैं कि why was hysterectomy done? The एक तो What patient- other options of treatment were there?
जी सर। तो अब आप ये मुझे बताओ कि हिस्टेरेक्टमी क्यों की पेशेंट? सर एक तो पेशेंट की विश नहीं थी फर्दर फर्टिलिटी की। फर्दर फर्टिलिटी इज बियॉन्ड दैट, वो तो हो गई, खत्म हो गई है, दैट इज नॉट, चलो वो रेलेवेंट इतनी नहीं बनती। लास्ट चाइल्ड बोर्न वाज हाउ लॉन्ग? 19 years back in 2000 19 साल में, अब आके उसको फर्टिलिटी क्यों हुई? पर चलो, secondly because of the heavy menstrual bleed she was having. हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड के लिए आप ये तो नहीं कर देते, हिस्टेरेक्टमी तो नहीं करते, दैट इज नॉट दी ट्रीटमेंट फॉर So हैवी her मेंस्ट्रुअल age was also 50 years. That is फिर क्या हुआ? median size. और क्या क्या ऑप्शन थी आपके पास? तो पहले Hysterectomy. डायग्नोस्टिक डीएनसी की गई थी? तो डायग्नोस्टिक डीएनसी नहीं की गई थी, की जानी डायग्नोस्टिक चाहिए थी। डीएनसी करने की कोई इंडिकेशन थी? Heavy menstrual bleed is itself an indication for diagnostic DNC. नहीं, उससे पहले अब आपने, अब इमेजिंग आ गई ना, आप अल्ट्रासाउंड करते हो देखने के लिए, तो अल्ट्रासाउंड पे आपको यूट्राइन कैविटी और एंडोमेट्रियम की थिकनेस नजर आती है, दैट्स अ गुड assessment of endometrium. But further assessment उसका histological character देखने के लिए you need to have endometrial sampling. Yes, sir. So उसके लिए DNC करोगे? DNC होनी चाहिए थी सर पेशेंट की। Is DNC the preferred method of diagnosing endometrial problems? ये सवाल लिखते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो लिखो आप। In a woman, let's say in this patient, if there were no fibroids and she had presented with excessive menstrual bleeding, her endometrium was 16 millimeter. Now, ultrasound पे वो आ गई थी. Yes, So sir. what would you have done? I would Without fibroids, heavy menstrual bleeding. diagnostic DNC I would have done. क्या? Diagnostic hysteroscopy. Yeah, hysteroscopy. अभी पहले hysteroscopy बोलो. Hysteroscopic assessment and hysteroscopic directed biopsy. आप बेशक उसकी क्यूरेटिंग लोगे अगर वो नॉर्म, बट hysteroscopic assessment होनी चाहिए. जी सर. Right? So hysteroscopy nowadays would take precedence or would be preferred compared to DNC as such. अच्छा, और क्या इनके हो सकते थे? सर लेप्रोस्कोपिकली भी रिमूव हो सकते हैं, वो तो लेप्रोस्कोपिक रिमूवल है ना, लेकिन एक हिस्टेरेक्टमी है ना, रिमूवल के अलावा और क्या क्या हो सकता है? सर एंडोमेट्रियल एब्लेशन हो सकती थी, लेकिन वो क्योंकि फाइब्रॉइड्स हैं हमें वैसे ही एग्जामिनेशन पे पता चल गए थे, फाइब्रॉइड्स की वजह से, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन पे पता चल गए थे वो, तो there was a bit of distortion of the uterine cavity because it is almost at right angles to the cervical canal, as you can see in the specimen. So that would have been a little difficult, but still, one would have got into that. What about medical treatment? Has she had tried any medical treatment? no, so she didn't. So wouldn't you want to give her medical treatment for that one? So marina insertion is one of the treatment for heavy menstrual bleed, but Marina insertion से पहले भी कुछ होता है? sir hormonal therapy and non-hormonal Marina में therapy. hormonal therapy है. Non-hormonal therapy ये like उसका delivery system है ना. So what hormonal therapy would have you given her? सर एक तो उसमें मरीना आ जाती है, ओरल प्रोजेस्टेरोन. मरीना बाद में आएगी, पहले ओरल की बात करो. सर ओरल प्रोजेस्टेरोन आ जाता है उसमें. कौन सा प्रोजेस्टेरोन? एथाइल एस्ट्राडायोल. एथाइल एस्ट्राडायोल जो है वो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है. एथाइल नहीं है, एथेनाइल है. एथेनाइल एस्ट्राडायोल, दैट्स एस्ट्रोजन, नॉट प्रोजेस्टेरोन. Name any progestogen product preparation. कोई ब्रांड नेम ही बोल दो. नॉन एसिटेट की प्रिपरेशन कोई है? नॉन एसिटेट की प्रिपरेशन है प्राइमलेटाइन. डाइड्रोजेस्ट्रोन की प्रिपरेशन कोई है? की प्रिपरेशन है डिफेस्टन. सो ये है जो प्रोजेस्टोजेंस अवेलेबल. इसी तरह से एक और भी है, वो
इस वक्त मेरे नाम से निकल रहा है। और मैं मेट्रिल है, मुझे वो सपना पसंदीदा है, तो इसलिए मैं उसका नाम याद कर दी मुझे। वो लाइनेस्ट्रिनॉल है, लाइनेस्ट्रिनॉल, उसकी प्रेपरेशन है वो मेट्रिल। तो these are various progestogen preparations which are available, वो है। उसके अलावा डेपो भी होती हैं जो इंजेक्टेबल भी होती हैं। और ये जब ओरल की दोगे, तुम पहले तो ओरल दे के देखते हैं ना, ओरल आप 2-3 साइकिल्स वो दे के देखो कि उनका इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद आप मरीना की बात करते हैं। सो आपने शुड वी हैव ट्राइड progestogen therapy on her oral medical treatment of abdominal bleeding? लार्ज साइज फाइब्रॉइड होने की वजह से मेरे ख्याल में ओरल मेडिकेशन हम उसको नहीं ट्रायल देते उसका। हाँ, हम अगर बहुत ज्यादा साइज बड़ा होता है तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट दे सकते थे, साइज छोटा करके और फिर उसको हिस्टेरेक्टमी की तरफ नहीं, लेके हम जाने के लिए। हिस्टेरेक्टमी की लेकिन बात नहीं अभी कर रहे हैं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट की कर रहे हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स। आपने ठीक कहा कि हार्मोन्स आप दे देंगे, और अगर लॉन्ग टर्म वो हो जाता है तो फिर आप मेरीना रखते हैं। बट इन दिस केस सिंस शी हैड फाइब्रॉइड, द यूट्रस वाज एनलार्ज्ड टू दैट एक्सटेंट एंड द यूट्राइन कैविटी वाज a little distorted, तो फिर इसलिए मेरीना जो है was not an option for this वो patient. नहीं इसका। और कोई ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में होती है भाई? यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, बोलो ना, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी हो सकती। तो उसमें जब आप इस पे जाओगे कि इस ये वाली चीज है, तो इसको आप क्या करोगे, तो इसमें आप पहले मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करोगे, जी सर। फिर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट, और वो सर्जिकल ट्रीटमेंट की वेरियस ऑप्शंस उसकी क्या। तो व्हाई नॉट रिमूव ओवरीज इन अ 50-year-old woman? तो हेल्दी ओवरीज थी तो ऑलराइट, तो फिर हेल्दी ओवरीज, लेकिन बाद में किसी ओवरी में सिस्ट बन जाए, कुछ और हो जाए, तो फिर patient will blame you कि नहीं आप ये क्या है। तो why would you discuss when you discuss with the patient? सर ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से एस्ट्रोजन इफेक्ट को देखते हुए प्रिजर्व कर लेना ओवरीज बेटर ऑप्शन था इस पेशेंट में। ऑस्टियोपोरोसिस और वो प्रिवेंशन ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स। और सबसे पहले so long as ovaries are functioning, तो cardiovascular disease का incidence, although she is hypertensive, but cardiac disease, heart attack, MI, etc., उसका incidence is lower in women compared to men, so long as the ovaries remain functional. And after menopause, then the incidence of cardiac diseases that increases, that overtakes the incidence in men. So therefore, वो है. And if her ovaries were to function, let's say for another 5 years, so if we remove ovaries, then we are taking away that advantage of ovarian hormones from her with regard to cardiac benefits, and also osteoporosis, because that would osteoporosis, it doesn't happen overnight or in a short time. It takes maybe 10 years or more. No, not 1 to 2 years. It takes longer. So, and not inevitably everyone suffers from that, but of course the incidence becomes greater. And therefore, giving extra 5 years or so for the ovaries to provide that kind of protection and advantage. So, ovaries को रखना, or particularly she didn't have any family history of cancer, right? And then, but still again, it is to be discussed with the patient before the planned surgery, telling them the advantages of maintaining, and also telling them there are pros and cons. Cons or the negative effects of that are that she might develop a cyst, which may be functional, but if she would have, she has an ultrasound and that shows a cyst, she would have thought, why didn't I get my ovaries removed? So cyst development is something which is common. Those functional cysts can be there, so that can be reassured. But she could also develop neoplasm, although she doesn't have a family history, but she has neoplasm. But if you look at both the advantages and disadvantages, the advantages of keeping normal, healthy-looking ovaries without any family history of problem is better than, and to take the risk of development of an ovarian cyst later or ovarian tumor, which is comparatively smaller, वो कम है उससे.
तो इसलिए ओवरीज को रख लेना बेहतर है। ठीक है, सो आवाज हमारी जा रही है कि नहीं? कोई जा रही को देखो, तो वो क्वेश्चन तो और किसी ने काफी सारे हो सकते हैं। ये जरा शेयर करना, जरा काम करें तो देखें तो। गुड मोहम्मद, मैंने तुम्हें धोखा इतनी जल्दी, वो तो मैं ज़ाहिर टोकता रहूंगा हमेशा जब भी होगी बात ऐसे, बट यू प्रेजेंटेड वेरी वेल, आई एम इम्प्रेस्ड। कोई नहीं है मैसेजेस, ठीक है। चलें सेशन खत्म करें, बाकी मैं तुम लोगों को थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सर एक प्रिपरेशन के बारे में बताया था आपने, लेनोस्ट्रीनोल। सर उसको ये ब्रांड नेम है या उसका उसके बारे में वो बताइए। मेरा ख्याल है और का मेटेरियल क्या है वो, मुझे देखने दो। हैं मेटेरियल, मेटेरियल ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स और मेटेरियल, हाँ लाइनेस्ट्रिनॉल ही है वो टैबलेट, यही है। और मेटेरियल OMATRIL 5 मिलीग्राम लाइनेस्ट्रिनॉल टैबलेट है। आई डोंट यूज दैट। और क्या मेटेरियल भी वही चीज ही है, क्या मेटेरियल है इसकी, ये MSD की प्रेपरेशन है। लाइनेस्ट्रिनॉल 5 और मेटेरियल और क्या मेटेरियल, दे आर द सेम and they have lanestrol. और भी प्रोजेस्टेरोन है। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके, चलिए ठीक है। Thank you so much, sir. गुड, शाबाश, हाँ बहुत अच्छा बोल, ठीक है। वो ये तो होगा, बैठ जाओ। ये तो होगा जब भी तुम बोलोगे मैं कोई ना कोई गलती निकालूंगा, एक स्लाइड पे गलती निकाल के अगली पे मैं वही उसको, जब तुम वो उसके मुताबिक बोलोगे फिर मैं उल्टा बोल दूंगा, तो वो तो होगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी है ना इसकी, जो किधर गई स्लाइड, ये मैंने उसका यहाँ पे क्या था, इधर गया, वो भी मैंने। अच्छा, एक तुम्हारा कंप्यूटर का मसला है, एक तुम कंप्यूटर ले दूं? हैं? नहीं नहीं, इधर ऑफिस में रख लो ना एक कंप्यूटर, वो ताकि ये तुम कहते हो कि उसका वो चलता नहीं है, ये कर दे बंद, बस खत्म हो गया काम तुम्हारा। डाउनलोड